तो गाइज़ ये हमारा इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। मैं एक पार्ट बोलूँगी और दूसरा पार्ट सिर्फ आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ आएगा। आपने उसे पढ़ना है और मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में प्रैक्टिस करे। तो इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ऑल्सो इफ़ यू हिट द थम बटन इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़। इससे हमें और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए और आप लोगों को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। सो हमारा पहला टॉपिक है आस्किंग अबाउट अ न्यू जॉब। सो इन दिस हम सीखेंगे कि हम कैसे एक इंसान से बात कर सकते हैं व्हेन दे हैव जॉइंड न्यू जॉब। अगर आपके कोई फ्रेंड है जिन्होंने न्यू जॉब ज्वाइन की हो, या अगर आप हो जिन्होंने न्यू जॉब ज्वाइन की और आपसे कोई उसके बारे में पूछ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। हे, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन? I'm good, thanks. I've been meaning to ask, how's the new job going? That's great to hear. What's your favorite part about the job? That's awesome. A good team can really make or break a job. How's the work itself? That sounds fantastic. Wow, that does sound exciting. Do you feel like you're setting into the company's culture? That's so important. It sounds like you made a good move. Any tips for someone starting a new job? Great advice. I'm really happy for you. Let's grab a coffee sometime soon so you can tell me more about it. Perfect. I'll text you to set it up. Good luck with your new job. Hey, I've been good, thanks. Just getting settled into my new job. How about you? It's going pretty well. Actually, the first few weeks were a bit overwhelming, but I'm getting a hang of it now. I'd say the team. Everyone is really supportive and friendly. It makes a big difference. It's challenging but interesting. I'm learning a lot of new things and getting to work on some exciting projects. Yes, we're working on a new product launch, which is both exciting and a bit stressful, but it's a great learning experience. Slowly but surely. It's different from my last job, but in a good way.
the work-life balance is much better here. Well, I'd say be open to learning and don't be afraid to ask questions. It helps to build a good relationship with your colleagues too. Definitely, I'd love to. Let's plan for sometimes next week. Thanks, talk to you soon. So the next topic is calling in sick for work. I'm sure आप सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. कभी ना कभी हम सब बीमार होते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है ऑफिस में कॉल करके ये बोलने की कि आज तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, नहीं आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगा. तो इसी को प्रैक्टिस करते हैं. पहले मैं डेफिनेटली एक पार्ट बोलूँगी. द ड्रिल इज सेइंग, hey, are you feeling okay today? Oh no, that's not good. Do you think you'll be able to manage? That makes sense. You should definitely take care of yourself. Have you called our manager yet? Yes, of course, go ahead and call. It's better to let them know early so that they can plan for the day. Of course, help comes first. Let me know if you need anything. Take care and get some rest. I'll keep you updated on anything you missed today. Not really. I think I caught a bug or something. I need to call in sick. I've been feeling pretty rough since last night. I think it's best if I stay home and rest. Not yet. I wanted to check in with you first. Do you think it's okay to call in now? Okay, I'll do that. Thanks for understanding. Thanks, I appreciate it. Hopefully, I'll be back in action soon. Will do. Thanks again. Talk to you later.